माय चैनल। सो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है इन बुक्स विद वेदी का यूट्यूब चैनल में। सो मैंने बहुत सोचा कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या ही इंट्रो वीडियो हो सकता है, मे बी आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड स्टफ, बट देन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू शो यू माई बुक कलेक्शन। आई मीन ये इतना ही नहीं है, और भी कुछ है, बट अभी इधर इतनी बुक रखने की स्पेस थी। So come, let's check it out. So the first book is Ortal by Samantha Harvey. This book I've got in PR. It's a space related book. As you can see, it has really good dynamics in it. I am not going to reveal more of it as I want to make particular video. On my Instagram you will find कि मैंने बस Wattpad reviews ही दे रखे हैं, and I've not really made reviews on them or shared my views on these books, which soon are going to, I'm planning to make it. So let's say every Saturday I'm going to review each one of these books for you on this channel, so you can subscribe and see what's going to come next. So for the next book is Emotional Intelligence. Now this is a psychological related book. Why it can matter more than IQ. I mean, this has basic psychology stuff. As being a psychology student, I don't seem that it has any in-depth knowledge about it. Just the surface level of it. Next, we have a Chinese author written book. I got this from a book fair. It was just for 50 rupees. So I just bought it and I've still not read it. So yeah, that's this. The next book is The Substitute of Not Giving a Fuck. Really, this book, I do not believe in the things that this book preach, because I am a greater believer in manifestation and this book does not align with it. So मेरे लिए तो ये बुक नहीं ही थी. So मैंने ये बुक को बस इतना ही खत्म किया जहाँ तक ये बुक मार्क है. I mean just this much. Anyways, moving forward, we have Red Flag and Rishtas by Radhika Agrawal. Now I have completed this book and it is 4.5 or out of 5, I would say. It was not a very fast pacing book, everything was really slow burn and you can predict the ending. Okay, it was a predictable kind of book, not a book that would give you a mystery or a suspense, or even romance has that stuff. But yeah, that was for it. The next we have is The Predictor. Okay, I am going to upload the review for this entire series. You can see here I have that another books for this, so I'm not going to say much about these for now. This book, oh my god, A Million Kisses in Your Lifetime. I was so mad for this book. You can see this is this much long and I was I want this book. It is pretty expensive. I think most expensive book that I ever have bought in my collection. This is on the 5th or 6th, I guess. और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ इसके ऊपर. सो इट वॉज माई बर्थडे, और बर्थडे पे मैंने मम्मी को इतना फोर्स किया था मुझे ये बुक चाहिए ही चाहिए. इट वॉज नॉट अवेलेबल ऑन Amazon, तो मैंने लोकल स्टोर्स में जाके इसको ख़रीदा है, विच इज़ वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव. बट इसके अंदर का I would say 0 on 5 star for this one. Full review इसका आने वाला है. So here comes the most favorite books of mine. They are hardcovers, not because of that, but then again I love them. This is Letter to Milena by Franz Kafka. One of my friend recommended me to read this book and I am obsessed with it. I've already read this book twice so far. Diary of a Young Girl is a book that I've read when I was in class 8th or something. And I really like this book on how it gives you depth of life. इस पे भी पूरा वीडियो बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा कुछ रिवील यहाँ पे. The next is Thinking of Winter by Shantanu Naidu, and this book is also signed by him. So wait, I'll show you. Here is Shantanu and his pet's signature. His name I forgot. So yeah, I am also in his book club, so every Sunday I go there. I will also vlog for you that video. Next, Manifestation. Oh my god, this is again a hardcover and I've annotate on it. Really good. If you are into manifestation or you want to start manifestation, this book is for you.
it is actually a whole community. Author has described her community in New York, so you can go and follow that also while practicing daily manifestation. It really helps. It really helped me, so that's why I'm suggesting you all to also read it and just follow its stuff so it happens. Next, again, as I said, I have मुझे अपने ही घर में वीडियो शूट करते वक्त इतनी शर्म आती है. लाइक मेरी मम्मी मुझे यहाँ से घूरती रहती है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं फ़ोन में इतनी बातें क्या ही कर रही हूँ, वो भी बुक्स के बारे में. लाइक सुबह से लेके शाम तक आई जस्ट रीड देम और आई टॉक अबाउट देम और आई जस्ट अपलोड और मेक वीडियोस अबाउट. अगर मैं कोई काम करूँ और उसमें अर्चन ना आए तो भाई वो काम हो नहीं सकता. ये माइक बंद पड़ गया एट दिस पॉइंट. क्या पता नहीं क्या हुआ, इसमें बैटरी चली गई और दूसरा वाला माइक है जिसकी वो बंद ही हो गया. तो मेरी मम्मी अभी मेरे को दूसरा माइक ढूंढ के दे रहे हैं यहाँ पे एंड शी इज़ लाइक कोई काम नहीं होता तुमसे. बुक इज़ किंग ऑफ ग्रीड एंड आई वुड से आई वुड गिव दिस बुक अ 0 out of 5 बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट. द नेक्स्ट इज द स्कैटर्ड मी सीरीज का पार्ट 5. आई हैव नॉट येट रेड दिस बुक सो आई कांट कमेंट ऑन इट. As long as the lemon tree grows. Oh my god, this is my most favorite book and अभी तक इसे 5 बार पढ़ लिया है. Like this is something very close to my heart. The next we have is The Striker by again Anna Huang. 3 out of 5 star. I did not like how the chemistry was between the couple and I did not like the sport romance that she has been written in this book so far. It was 3 out of 5 stars as I said. The next is People We Meet on Vacation. People We Meet on Vacation की जो सीरीज़ है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी rather than this book. अभी you can't do anything, okay? Book के लिए I would give 3 out of 5 stars. The next we have The Most Special Book. ये book मैंने लिखी है guys. जाके पढ़ो. I am the co-author in this book with my professor. ये साइकोलॉजी की बुक है. अगर तुम्हें साइकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है या you want to know about psychology in a very formative study types तो तुम्हें ये पढ़नी ही चाहिए. Unravel Me. Now again this is a part of Scatter Me series. This is book 2 in it. The next is also one of the part of Scatter Me series और ये कौन सा part है मुझे नहीं पता. So ये वाली बातें हैं. Then again this is the mystery thriller Rock Paper Scissor. I want to read this book but अभी मेरे पास टाइम नहीं है. वॉटपैड बुक्स पढ़ने में इतनी बिजी हूँ कि मैंने ये सब बुक्स अभी तक नहीं पढ़ी. सो मैं ये डेफिनेटली पढ़ूंगी और इसका रिव्यू यूट्यूब पे डालूंगी डेफिनेटली गाइज. द नेक्स्ट इज कन्फेशन ऑफ एन IT एम्प्लॉई एंड अगेन दिस वॉज PR. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस बुक रिव्यू ऑन Instagram. जाके देख लो, बहुत सही बुक है. रेस्ट बुक रिव्यू जो कि अगर मैं तुमको बोलूँ तो यहाँ पे है. आई शो यू वेट. तो बाकी बुक्स ये रही, मतलब मैंने इसके अंदर रखी है यहाँ पे इन द कार्टून. सो इफ़ यू गिव मी लाइक 50 likes ऑन दिस वीडियो आई विल मेक दिस पार्ट 2. ये बहुत ज़्यादा वैसे भी लंबा ही हो रहा था. सो 50 likes ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक द पार्ट 2 फॉर यू. मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड और क्या होता है यूट्यूब पे वो भी कर देना. ओके बाय.